Hey guys, good morning. So in this short workshop, I'm going to be talking about Axis Bank. I'm going to be talking about the quarter one results of Axis Bank, a bit more on the integration with the city retail book that they acquired about 6 to 9 months back, and of course I'm going to be talking about the intricacies and all the insights that I got from listening to the con call transcript with the management of Axis Bank. So let's get started. First of all, Axis Bank has been doing very well on all the three parameters. Like the first parameter is asset quality. If you look at the gross NPA number, the net NPA number, right? The NPA numbers are improving on quarter as well as on YOY basis. So asset quality of Axis Bank is getting better and better. Second is, if you see that the profitability metrics are also improving, right? Because if you look at the ROE number of Axis Bank, the ROE number is almost touching 20%. And I can tell you the ROE number was less than 14% probably 2 years back, and I think last year the number was around 16%. So 16% से 20% का ROE करना is not a small joke for a big bank like Axis Bank. So ये हो गया दूसरी वाला पॉइंट. तीसरे वाला पॉइंट आप ये देखोगे, Axis Bank focus more on the retail side of lending. Retail side of lending में दो साइड में Axis Bank ने बहुत पुश किया. एक तो उन्होंने पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड में, इफ यू सी Axis Bank is one of the leaders in credit card distribution in this country. दूसरे साइड में Axis Bank took a strategic call a couple of years back that they're going to be focusing more on the SME and the MSME segment. So I'll give you a small little data here. If you look at the small business bank segment and the SME segment and the mid corporate segment, ये तीनों सेगमेंट को अगर आप मिलाओगे ना, तो आज वो एक्सिस बैंक का 20% ऑफ द टोटल बुक है. मतलब आई थिंक 3 साल पहले दिस वाज अराउंड 13-14% ऑफ द बुक. बिकॉज एक्सिस बैंक को ये चीज समझ में आ गया कि इंडिया में ये एमएसएमई का बूम आ चुका है. इफ यू हैव हर्ड एनी ऑफ माय अदर वर्कशॉप्स राइट ऑन द अदर बैंक्स दैट हैव बीन अपलोडिंग ऑन ट्विटर एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज वेल, आई कीप टेलिंग यू कि दिस इज अ मेगा ट्रेंड. द होल एमएसएमई का साइकिल कमिंग अप राइट इज अ मेगा ट्रेंड. नाउ दिस इज द थिंग राइट, लाइक एज आई टोल्ड यू राइट कि लाइक 10 साल पहले हमारे कंट्री में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो बूम आया था, आज एमएसएमई में वही बूम आ रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जीएसटी, एंड इट हेल्प्स into getting these financials to get more and more data about get data on millions and millions of छोटे छोटे businesses across the country. और जितना आपको डेटा मिलेगा उतना आप lend कर पाओगे. So basically the world is shifting now. I'll tell you this, the world is shifting now slowly from a collateral based lending to data based lending. Okay, even if you see like businesses like Jio Financials and all that, right? Jio will play the data game in the game of financials over, let's say for example, the traditional way of just saying कि like okay I just need collateral. Although having said that, collateral से of course like आज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cash flow based lending. Got it? Because if you think about this right, any good business, let's say एक छोटे किराने का दुकान है, ठीक है, और वो बंदा बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहा है, एक बड़ा बैंक आके शायद उसको लोन ना दे ये सोच के कि लाइक अरे तुम्हारे तो कोई जमीन नहीं है बड़ा, तो मैं तुमको लोन नहीं दूंगा. बट एक छोटा लेट्स से फॉर एग्जांपल एक फिनटेक कंपनी आके उसको लोन देगा बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज दैट ही इज जनरेटिंग ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस. गॉट इट? और ये कैश फ्लोज कितना हो रहा है, रेवेन्यूज कितना हो रहा है, दिस कम्स फ्रॉम इफ यू हैव फाइल्ड फॉर जीएसटी. तो आपको पता चल जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ पे जा रहा है, सप्लाई चेन में कौन कौन से प्लेयर्स है. करेक्ट? बिकॉज जीएसटी तो यही है ना कि लाइक अपना जो सारा सप्लायर्स है वो भी जीएसटी पे करता है, और फिर ऑफकोर्स उनको बाद में जाके उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है. बट ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ सेशन ऑन जीएसटी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड फॉर्मलाइजेशन ऐसे छोटे छोटे दुकानों को, और सोचो हमारे देश में कितने करोड़ों दुकानें हैं. करेक्ट? ऐसे करोड़ों दुकानें हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, कितने फार्मर्स है, ठीक है, जो जिनको धंधा करना आता है, सालों से धंधा किए जा रहे हैं, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है. सो एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द 4 बिग बैंक्स जो सबसे पहले ये ट्रेंड समझा था बैक इन 2020. सो नाउ एज यू सी के लाइक स्मॉल बिजनेस बैंकिंग, मिड कॉर्पोरेट लेंडिंग एज वेल एज एसएमए लेंडिंग इज नाउ 20% ऑफ देयर बुक. इसके वजह से क्या हुआ, नाउ सिंस इफ यू गिव आउट लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस राइट, आपका यील्ड ज्यादा होगा. इसी वजह से नाउ यू सी एक्सिस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज नाउ मोर देन 4%. पहले वो 3.5% के आसपास हुआ करता था इन अ प्री कोविड वर्ल्ड. नाउ इट्स नॉट द 4% राइट. एंड इसके साथ साथ द बैंक हैज आल्सो इंप्रूव्ड इट्स एसेट क्वालिटी एज वेल. दैट्स व्हाई यू आल्सो सी like the Axis Bank stock has done pretty well in the last 2-3 years.
Okay, so and having said that, because of all these things, as I tell you, what is the single most important parameter to track a financial? That's the ROE number. And if you see Axis Bank ROE number is at an all-time high of around 20%. Now, second thing is like the general question is this, right? They did a big acquisition about 6 to 9 months back, right? Citi Group का, so Citi is a foreign bank, right? उनका जो retail unsecured, मतलब जो retail जो book था इंडिया का, उन्होंने उसको acquire किया, right? So they acquired the book. And there was this question that was asked on the con call, like, would you be able to manage the, like, maintain the ROE around 20%, right, going forward with the book? Axis Bank says yes. Right, so that's a good thing. Of course, we have to track the business and see. But let me tell you one thing: the whole integration of the Citi book was done in such a flawless manner that I was really impressed with how Axis Bank conducted this whole thing in the last 6 to 9 months. Second thing is, like, of course, if you're acquiring a retail book, there will be some upfront cost, right? Because as I told you, right, like, if you are lending into retail, right, your upfront cost, your OPEX will be higher. If you lend to corporates or if you lend to home loans, your cost of, lending will be lower. लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन यहाँ पे ज्यादा जा रहे हो ना, तो यहाँ पे your cost of financing the loan would also be on the higher side. That's why you would see like all the retail banks like IDFC first हो जाए, then if you look at the small finance bank हो जाए, since they're more focused on the retail side, there you will see that their NIMs are always on the higher part. And of course, since they are giving out loans to the SMEs and the MSME sector, ये लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो इसलिए इनका yield भी ज्यादा होता है. So, ये सब भी एक्सिस बैंक के साइड में प्ले आउट हो चुका है. Now, let's look at the other side. Say if I tell you some other profitability metric, Axis Bank grew its profit after tax 41% on a YOY basis, right? So this is way higher than the likes of HDFC Bank and Kotak Bank. इसीलिए Axis Bank and ICICI Bank, if you see, have done well on profitability metrics as well as the asset quality metrics. HDFC and Kotak Bank did very good on the asset quality metric, but profitability metric में इन दोनों बैंक से थोड़ा पीछे रह गए थे. इसीलिए you saw like how Axis Bank and ICICI Bank have outperformed the stocks of HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank. Okay, so now let's understand. Let's see like if I have anything else to say. No, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं. मोटा मोटी this was all that was discussed in the con call. I mean, like, I'm talking about the major insights. Going forward, of course, the management says that they would want to stick to the ROE number of 20% and not let it fall, and not let the NIM ka number to fall below 4%. Because let me tell you this, going forward, there will be some contraction on NIM, right? Not only for Axis Bank but for all the other banks, because deposit repricing हो रहा है, right? Deposit जब repricing होगा, तो of course NIMs का थोड़ा contraction होगा. Okay, so that's more or less about Axis Bank. And just remember one thing, Axis Bank is a bank that is increasing its base more and more towards the SME and the MSME space rather than lending to the large corporates. Got it? One last thing about Axis Bank is like, since they are a retail bank, अगर मैं retail unsecured का भी बात बोलूँ तो they are doing very well. I mean, if you look at the whole credit card and the personal loan division, right? The credit card and personal loan division अगर आप देखोगे तो that almost like doubled in the last 2 to 3 years, right? So even that unsecured book is also growing at a very fast pace. और अगर अपने asset quality को ढंग से maintain कर पाया and you can grow that book at like you can double the book in 2 to 3 years, you will understand कि like यहाँ पे yield ज़्यादा मिलता है, because credit card में the yield is 30, 35, 40% on a YOY basis, right? So if Axis Bank has to keep like the NIMs of like more than 4%, they need to give out more loans on the retail side than on the large corporate side. I mean retail as well as small business bank and the MSME space of India. And just like AU Small Finance Bank said, right, and all the other banks are also saying in similar tones, Axis Bank is also now targeting more towards the Bharat region. Bharat is basically India का hinterland, tier 2, 3, 4, 5 cities, जहाँ पे लाखों करोड़ों ये जो MSMEs है इनका formalization हो रहा है. So that is where Axis Bank wants to grow more of its presence instead of just being a bank जो कि सिर्फ शहरों में है. Right? And of course, but having said that, Axis Bank has a large book, and of course उस book में अगर आपने 26% से grow किया advances, which is a very good sign. Deposits also grew like at a good pace, like around 15-16%. और अगर मैं आपको Axis Bank का loan book का size बता दूँ, so that is approximately 8.5 lakh crores. और अगर आप deposit का book देखोगे, that's like 9.5 to 10 lakh crores के आसपास. So it's a fairly large bank. अगर आप इंडिया में देखोगे तो SBI, HDFC Bank, ICICI बैंक के बाद ही as per size Axis Bank आता है.
राइट. एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड देर ऑल्सो ओपनिंग मोर एंड मोर ब्रांचेस, सो दैट जितना आप ज़्यादा ब्रांचेस खोलोगे उतना आप कस्टमर के पास आओगे, राइट, और उससे आपको डिपॉजिट बेस ग्रो करने में हेल्प करेगा. सो ऑन दैट नोट, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस. कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.